Okay, so all those students who have prepared their presentation, raise your hand so that one by one I can allow you to present your in front of the class. और जितने भी student हैं, please switch on your camera. Each and every student should switch on their cameras. Excuse me, ma'am. Okay, now am I audible? Okay, so जितने भी students हैं, ऋतु बच्चे आपने present कर दिया था last class, दोबारा से present करना है. Okay, so Abhishek, are you ready for your presentation? जो student prepared हैं presentation के लिए, they can raise their hand. I will allow you to unmute yourself and then you can present. Yes, again I can see so many screens blacked out. Why? कैमरा ऑन करिए सब कोई और ब्लैक स्क्रीन किसी का भी नहीं दिखना चाहिए मुझे. रितु, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम आईडी से लॉगिन करना ये कैसे पता चलेगा? और चेक करके बता सकते हैं? बच्चे नेम के आगे जो लगाना है हम लोग को वही सब ना? नहीं, वो नहीं, जो सीमेज का आपको एक ईमेल दिया गया होगा ना, एक आईडी दी गई होगी, उस आईडी के थ्रू आपको लॉगिन करना है टीम से. Okay, anyone else who has prepared? That's all right. You can leave and again join. That's all right. Okay, so anyone else? Those students who have prepared for presentation, they can raise their hand. Yes. किसी ने प्रिपेयर नहीं किया है क्या? इस तरह आप फिर शांत रहेंगे तो फिर आई विल हैव टू. ओके, यस पुष्कर. May I start, ma'am? Yes, you can start. Okay. Very warm and crisp morning to one and all present here. Myself, Pushkar Vishal from BBA Batch 2. And thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity to share my friend's story to you all. Okay, see, so this is my friend's story. When she was traveling, when she reached the airport, then she know that her flight is get delayed for an hour. Then she went to the food court and buy a packet of cookies for herself. Then she sat on the table which is in the waiting room. After few seconds, a guy came and also sat on that same table. They both were reading their own books. My friend, after that, placed her hand and picked up cookies from her packet which she buy and start eating. The guy who's sitting next to her also placed her hand and pick up cookies and start eating. Then my friend gets little bit angry that how he
could eat his food without his permission. What is his behavior? But after a few seconds, she ignored that behavior of that guy and start eating. Then after a few seconds, she again placed his hand and picked the second cookies from that packet. And that guy also placed his hand and picked his second cookies. And this process continued going and going on until the last cookies left. When the last cookie left, at that time my friend's temperature is very high, means she was very mad on that guy, on his behavior. Then that guy do something even worse. He picked that last cookies and split into two parts, and one half he gave to my friend and smiled and take all his luggage and left that place. At that time, my friend is very angry that how he can do this type of behavior. He, without asking me, he ate half of the cookies of that box. And what is this uncivilized behavior? Means she was totally mad. Her temperature is crossed 100 degree. Uh, then she bent down and picked her bag. Then she discovered a box which is full of cookies, and that box is untouched. Then she realized that she take all those cookies that she had been taking is of that guy. Without his permission, she ate half of the cookies of that box without his permission. Then she felt that how wrong she was. Then she tried to find that guy, but she couldn't. So the conclusion of this story, means the moral of this story is, whenever we making judgment about other, we are making mistake. So without knowing others' story, we can't judge themselves. So please never judge anyone. Thank you, ma'am. Okay, so story was good. ठीक है, स्टोरी ठीक थी आपकी, लेकिन you should have a little bit, you should work on a little bit of your flow. ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन में, ठीक है, सिर्फ आपको फ्लो पे ध्यान देना है. ठीक है, और थोड़ा सा टोन वेरिएशंस आने चाहिए. स्टोरी आप बता रहे हैं ना, तो स्टोरी की तरह लगना चाहिए. ठीक है, इट शुड नॉट बी एज इफ यू आर रीडिंग. ठीक है, रीड कर रहे हैं कि कहीं से इस तरह का वेरिएशन नहीं आना चाहिए. आपकी वॉइस टोन में वेरिएशन थोड़ा सा रहना चाहिए. ठीक है, जैसे आप अगर कोई स्टोरी आपने कभी सुनी होगी, जैसे कभी आप कोई मूवीज आपने देखी हो डिज्नीलैंड की. ठीक है, वो मूवीज में कैसे स्टार्ट होता है स्टोरी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल इन दिस पर्टिकुलर विलेज. तो ये जो टोन और वेरिएशन होता है, ठीक है, जब आप एक्साइटेड हैं, जब आप गुस्से में हैं, ठीक है, तो ये सारे वेरिएशंस, ये सारे इमोशंस आपकी वॉइस में सुनाई देनी चाहिए. ठीक है, एक्सप्रेशन ठीक ठाक है, इसमें कुछ ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन आई हैव टोल्ड यू द ओनली थिंग विजिबल ऑनलाइन इज योर फेस. so you have to work on your facial expression. फेशियल एक्सप्रेशन आप अपने आप जब उस चीज को फील कर रहे होंगे तो आ जाएगा. उसके लिए बहुत ज्यादा वर्क करने की आपको जरूरत नहीं है. बट द थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन विल बी योर फ्लो एंड योर टोन एंड पिच. ठीक है, थोड़ा सा अपना इमोशंस जो है वो अपने थोड़ा सा अपना इमोशंस जो है वो अपने वॉइस में लाने का कोशिश करिए. यस, ये जितने भी स्टूडेंट है जिनका ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, ठीक है, और ये जो कैमरा ऑन करके सो रहे हैं, ठीक है, क्लास चल रही है, यू हैव टू बी अटेंटिव. ठीक है, अदरवाइज फिर क्लास से मैं निकाल दूंगी आपको, क्योंकि क्लास करने का कोई फायदा नहीं है जब आप इस तरह बिहेव कर रहे हैं क्लास में. तो ओके, एनीवन एल्स हु हैज प्रिपेयर्ड देयर स्टोरी? यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो, जितने बैच 2 के भी स्टूडेंट हैं, आप भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए या आप बहुत ज्यादा अटेंडेंस है तो आप बैठे रहेंगे ऐसे ही सुनते रहेंगे. ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन स्टोरी, यू हैव टू प्रेजेंट योर ओन स्टोरी. अगर आपको स्टोरी नहीं करना है तो आप एटलीस्ट एक स्पीच तैयार करके मुझे प्रेजेंट कर सकते हैं. इससे क्या होगा, आई विल बी एबल टू जज हाउ मच वर्क you have to do on various aspects of your presentation. ठीक है, okay, so nobody else is raising their hand. Has nobody else has prepared their story?
और किसी ने भी प्रिपेयर नहीं किया है स्टोरी को? यस, यहाँ पहली बात तो जितने भी स्टूडेंट हैं बैच 1 के स्टूडेंट, एटलीस्ट आप लोग को प्रिपेयर होना चाहिए था, क्योंकि आप लोग को मैंने 3 दिन पहले ही बता दिया था। ठीक है, सो इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट मीन्स कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बैच 2 आ गया है तो आप उसमें नहीं ध्यान दिया जाएगा एक एक बच्चे पर, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं, ये मैं बता देती हूँ पहले। ठीक है, बैच 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, okay, so the list that I have prepared has all the students from that list presented their story. आकृति बच्चे आपने प्रिपेयर किया है स्टोरी, प्रेजेंट कर दिया है स्टोरी? आकृति रोल नंबर 83 बैच 1 नहीं है प्रेजेंट। ओके, रोहित हैज प्रेजेंटेड रोल नंबर 97। रोहित, रोहित बच्चे आपने प्रेजेंट कर दिया है अपना स्टोरी? यस, रोहित बी प्रिपेयर टू प्रेजेंट योर स्टोरी। मैम कर दिए थे। कर दिए थे, ओके यस मैम। ओके फाइन देन। यहाँ लिस्ट में जितने बच्चे थे उतने प्रिपेयर हो गए हैं। बाकी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या मुझे अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी, तभी वो प्रिपेयर होंगे, तभी वो करेंगे प्रेजेंट? यस रविशंकर। मैम बोल दिया था लास्ट क्लास में। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रही, बाकी स्टूडेंट जिन्होंने बोला है। यस प्रियंका। मैम मैंने प्रेजेंट किया था ना। यस बच्चे, मैं वही बोल रही हूँ, बाकी के स्टूडेंट जो हैं उन्हें कब प्रेजेंट करना है, उनके लिए क्या मुझे अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी फिर से? I think Tabrez and Aman and one more student has presented from batch 1, right? Yes, सबसे पहले तो यहाँ जो मुझे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे ये बताइए कि आपका प्रेजेंटेशन जो है उसे तैयार करने में एटलीस्ट बैच 1 स्टूडेंट आप लोगों को कितना दिन लगता है प्रिपरेशन करने के लिए? You just have to present a story. See, I didn't told you कि आप, मैंने ऐसा मना नहीं किया था कि आप किसी और की स्टोरी सुना नहीं सकते हैं। ठीक है, मैंने खुद से लिखने के लिए इसलिए बोला क्योंकि फिर आप जब दूसरे की स्टोरी सुनाते हैं ना तो आपके एक्सप्रेशन मर जाते हैं वहां पर। आप ना एक्सप्रेशन देते हैं ना आपके वॉइस में कोई वेरिएशन आता है। ठीक है, यू आर जस्ट रीडिंग द स्टोरी एज इफ आपके हाथ में एक किताब है और आप उसको पढ़ रहे हैं बस। यस आर्या, यू हैव प्रेजेंटेड, आई नो। बाकी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कितना टाइम लगेगा प्रिपेयर करने? बैच 2 स्टूडेंट ऑल्सो, आपको जो भी प्रिपरेशन करना है, यू कैन प्रेजेंट अ स्पीच, यू कैन प्रेजेंट अ स्टोरी, व्हाटएवर यू कैन प्रिपेयर, आपको वो प्रेजेंट करना है। आई हैव टोल्ड यू लास्ट क्लास ऑल्सो। ठीक है, यहाँ बैठ के सुनने के लिए नहीं आइए, यू हैव टू कम हियर एंड स्टार्ट प्रेजेंटिंग। ठीक है, क्योंकि स्पीच का या किसी का भी प्रिपरेशन आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन सीखने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना होगा। दैट मीन्स यू हैव टू कम अप हियर। ठीक है, प्रिटेंड दैट यू आर इन ऑन द स्टेज एंड यू आर प्रेजेंटिंग अ स्टोरी और प्रेजेंटेशन और स्पीच इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। ठीक है, ओके, तो यहाँ जितने स्टूडेंट हैं, लेट मी प्रिपेयर अनदर स्पीच। तभी मेरे को लगता है मेरे को दोबारा से एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, तभी आप लोग प्रिपेयर करेंगे। यस मनीष, अगर आपने कर दिया है, मुझे याद है कि आपने किया हुआ है, और कुछ बोलना है तब आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। ओके, सो बैच 1
के जितने स्टूडेंट है, बैच 2 स्टूडेंट, ये लास्ट चांस है आपका। इस क्लास के बाद आई विल बी मेकिंग अ लिस्ट फॉर योर्स टू, ठीक है। अगर बैच 2 स्टूडेंट जो हैं वो खुद से प्रिपेयर कर लें, ठीक है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास आपकी भी लिस्ट एक आ जाएगी एंड उसके हिसाब से फिर आपको 1 बाय 1 कॉल आउट किया जाएगा प्रेजेंट करने के लिए। तो अपने से प्रिपेयर करें एंड यू कैन प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ योर क्लास। ऑलराइट, तो बैच 1 के जितने स्टूडेंट हैं, लेट मी सी, यस, बैच 1 के जितने स्टूडेंट हैं उनका और एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाता है, तभी वो शायद प्रेजेंट करेंगे। यस, बैच 1 रोल नंबर 42 पूनम, क्या आप प्रेजेंट कर चुके हैं? पूनम कुमारी, आप प्रेजेंट अगर कर चुके हैं तो यू कैन रिस्पॉन्ड, अदरवाइज बी प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आपका होगा। हाँ, तो नेक्स्ट के लिए आप प्रिपेयर रखिए, ठीक है। अभी प्रिपेयर कर सकते हैं तो अभी कर दीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास आप प्रिपेयर करेंगे। बैच 1 रोल नंबर 70 आयुषी प्रीतम, आप प्रेजेंट कर चुके हैं? आयुषी प्रीतम, आप प्रेजेंट कर चुके हैं? यस अंकित। गुड मॉर्निंग मैम। मैम बोल रहे हैं हम कि 95 और 85 और 35 आपसे झूठ बोल रहे हैं मैम, नहीं रिप्रेजेंट किए हैं आपके सामने। 95 तो मैंने बोला नहीं सॉरी, था। 97 मैम, 97, 85 और 35 देख 97, लीजिए। 85 एंड 35। यस मैम, नेक्स्ट क्लास में इन लोग का रिप्रेजेंटेशन लीजिए मैम। बच्चे, इफ यू हैव डन इट डोंट वरी, ठीक है। आप भले देखे ना देखे, लेकिन मैं आपके जो लास्ट क्लास के वीडियोस होते हैं उसे चेक करती हूँ कि कितने बच्चों ने प्रेजेंट किया है। यस, तो बैच 1 के यहाँ पर जितने स्टूडेंट हैं, पूनम एक हो गई, उसके बाद यस रोल नंबर 70 आयुषी प्रीतम, आई स्टिल डोंट हैव एनी रिप्लाई कि आपने किया है प्रेजेंट या नहीं किया। ओके, आयुषी ने कर लिया है, ठीक है। यस, रोल नंबर 44 मौसम सिंह, मासूम सिंह, सॉरी, आपने नहीं किया है मासूम। यस, मासूम, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर प्रिपरेशन? शुभम, आपको प्रेजेंट करना है? ओके, यस यू कैन प्रेजेंट। मैम थोड़ा सा मतलब सर्दी है तो आवाज में दिक्कत होगा। ओके, इट्स ऑलराइट। So good morning all of you. My name is Shubham Kumar and my story is about knowing our own ability. So once upon a time, an eagle's egg came between the chicken's egg, and then after few days, the chickens were came out from the egg, and eagle's egg and the baby eagle also came out from the egg. So uh, and they started growing up, and after few days, uh, they do the same like all the chickens do. And one day, uh, he saw an eagle into the sky, and he asked to the chickens that who is that manifesting bird flying high in the sky. And he asked that we can't do the same. So they replied that no, we are chickens and we couldn't fly high like that bird. And and he inserted that thing into his mind and he never tried. So the moral of the story is that we should know our own ability, and we should try, and also um, we should try, and
we can't judge ourselves from the next person's reply. So thank you, ma'am. Okay. So again, Shubham, there was not the method of your हेल्थ, ठीक है, वो आपकी तबीयत खराब की वजह से नहीं यहाँ पर इशू हुआ। इशू यहाँ पर हुआ अगेन योर इमोशंस वर डिटैच्ड, ठीक है। थोड़ा सा आई एम टेलिंग यू एवरी टाइम, एवरी पर्सन आई एम टेलिंग यू हु इज प्रेजेंट इन दिस क्लास, whenever you are presenting in front of the audience, your emotions should never be detached from your presentation, ठीक है। चाहे आप कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने कल को कोई ऐप बनाया और उसके सामने आप प्रेजेंट करेंगे, किसी के सामने प्रेजेंटेशन देंगे, तो वो ऐप पे आपने जितनी मेहनत की है वो प्रेजेंटेशन में डालने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? फिर हिला के बता दो, यस मैम, करेंगे कि नहीं करेंगे? फाइनल ईयर का जो आपका प्रोजेक्ट होगा उस पर आपने जो भी मेहनत की हो वो सारी मेहनत आप कोशिश करेंगे आप प्रेजेंटेशन में बताएं अपने जो भी एक्सटर्नल्स हैं या फिर जो भी आपके प्रेजेंटेशन सुनेगा उनको। तो जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं ऑडियंस को, योर वॉइस शुड कंटेन दैट इमोशन ऑन ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। अगर आप एक्साइटेड हैं तो वो एक्साइटमेंट आपकी वॉइस में दिखना चाहिए। अगर आप गुस्सा हैं, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं, जो स्टोरी अगर आप बोल रहे हैं, जैसे अभी एक बैच के जो पुष्कर ने जो स्टोरी सुनाई, उसमें जब वो उसकी फ्रेंड गुस्सा हो गई थी तो वो गुस्से वाली आवाज उसमें दिखनी चाहिए थी। शी वॉज वेरी एंग्री दैट हाउ कुड दैट पर्सन टेक हर फूड विदाउट एनी परमिशन, दिस इज हाईली अनरिस्पेक्टफुल। ये जो इमोशन होता है ये आपके वॉइस पे कन्वे होना चाहिए, ठीक है। when she was regretting her decision, oh my lord, I wish I could meet that person and say sorry to him or ask his forgiveness। इमोशंस जो हैं ये आपकी स्टोरी में पता होनी चाहिए। इट इज अ स्टोरी टेलिंग, ठीक है, कहानी आप सुना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे ये बताइए, कभी किसी ने कोई कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है? एक थम्स अप दे दो सब कोई जिसने कभी कोई कहानी सुनी हो। दादी नानी किसी ने तो सुनाई होगी, चाचा मामा कोई ना कोई होगा जिसने कहानी सुनी हो। तो वो एक्सप्रेशन के साथ सुनाते थे कि नहीं आपको सुनाते हैं? तो वो एक्सप्रेशन आपके क्लास में क्यों नहीं आता है? यहाँ पर पढ़ाई हो रही है लेकिन आप फिर भी कम्युनिकेशन सुनाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब आप अपना कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। व्हाई इज इट हेल्पफुल? लेट मी टेल यू। मान लीजिए कल को आप होके सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, भगवान करे सब कोई सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल हो गए, आप अपना इंटरव्यू देंगे या अपना किसी कहीं पे भी प्रेजेंटेशन देने जाएंगे कि व्हाट ऑल स्ट्रगल यू हैव डन, ठीक है, क्या क्या स्ट्रगल्स आपने किए हैं, तो उसमें इमोशंस आएगा कि नहीं आएगा? तो वहां पर अगर आप अपने वर्ड्स प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर इमोशंस नहीं आ रहा है तो ऑडियंस जो है उसे फील नहीं होगा कि अरे इस बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया है, इस पर्सन ने बहुत स्ट्रगल किया है, मुझे भी इतना स्ट्रगल करना चाहिए, शायद मुझे भी सक्सेस मिल जाए, ठीक है। तो जब भी आप स्टोरी बताते हैं, ठीक है, वो स्टोरी चाहे आपसे रिलेटेड हो या किसी और से रिलेटेड हो, your voice should contain each and every emotion that is being conveyed here, okay? Okay, so Krit, you want to present? Yes, ma'am. Okay, you can go ahead. Good morning, ma'am. I'm audible? Yes, you're audible. Good morning, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for giving me the opportunity. Ma'am, I'm sharing my storyline of woman empowerment. I know this is a vast topic that it covers very hard stories to be dedicated. I share the story of few years back. I'm living in an apartment. There was a guard and his family staying in. And with his family, there was two kids. They always used to fight with a small little things of words, and something happened between them. And that guard used to trash his wife and beat his wife and hamper him through belt and many things. But his wife always used to what do you say? She used to have a patience.
She never stand for herself. She always predict that he is a husband. Why should I go against him? And one day I saw at a night, it was 8 o'clock night, and I was standing in balcony, and I saw that guard is tracing her wife with the some small fights, without small topic there was, and he was chasing his wife, and I saw her and ran through it and ran to him and stopped him. Why he is chasing? With a small little points, he was chasing his wife. I pushed him back. I slapped him. Why he is chasing him? I scolded him. I shouted to everyone, "Come here and catch the guard." And that lady, his wife, was very crying and very depressed. And after the next day, I was sitting in. It was the month of November. I was sitting in sun, sitting outside in chair, and just we are talking, I and his wife, just we are taking. I told him, why don't you take a stand for yourself? Why don't you protect yourself? There's many reasons that he can hurt you. Why don't you take your kids and be apart, be separated from him? That woman told me, no, let it be. He's my husband. I can't leave him because he is the earning member of my family. If I got separated, the society will criticize me with the many of the reasons. So I want to be stay with him. I have the patience uh, to conquer all his chastisements, conquer all his moment, what he has been predicting me and beating me and scolding me and whatever he do. I just told her that, listen, one day it will come that you will take your stand for yourself and your husband will not support you. So better take your advice is to stand yourself and move on. And my moral of the story is that woman empowerment defines the woman should take the stand for themselves. Women should know the power. Woman is the dignity of any house. He is not the dignity of that person reputation, but it's a dignity of their home, society, and the cultural they are living. So respect everyone. Do If you give respect, you will gain respect. Nothing else. You will get. The respect is the big priority and the blessing from any God, any person. Thank you so much. Okay. Chris, story was nice. Okay. Moral was very motivating. स्टार्टिंग में जब आपने स्टोरी स्टार्ट की थी, देयर वाज अ लिटिल इंट्रोडक्टरी पार्ट, थोड़ा सा एक्साइटमेंट था वहां पर, ठीक है, और एंडिंग में थोड़ा सा वहां पर भी एक्साइटमेंट था, लेकिन जब स्टोरी आप सुना रहे थे उसके बीच में इमोशंस खत्म हो गए, ठीक है, वहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है. व्हेन योर स्टार्टिंग इज वेरी गुड एंड योर एंडिंग इज वेरी गुड, ऑल ओवर प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, ओनली वेल हो जाता है, लेकिन अगर आप पूरा कंटिन्यू वो फ्लो रखते हैं तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है. अनम्यूट करिए बच्चे. Ma'am, actually few days and my health is not good and my neck is also that's rashing. That's why I couldn't go on flow. I'm sorry for that. I'll try. ओके, दैट्स ऑल राइट, ट्राई नेक्स्ट टाइम, ठीक है, जो भी है. लेकिन मैंने बता दिया कि आपकी इशू जो है, यू कैन डू ओनली जस्ट कैरी ऑन द फ्लो, ठीक है. आपका स्टार्टिंग ठीक था, एंडिंग बहुत अच्छा था, मिडिल में भी थोड़ा सा बेटर हो सकता था. ओके, दैट्स ऑल आई एम टेलिंग. ओके, एनीवन एल्स? यहाँ पर और भी एक स्टूडेंट था जिसने हैंड रेस किया था, शिवांशु. यस. Yes, ma'am. Morning, ma'am. Yes. Good morning. I am Shivanshu Kumar, and today I am going to share with you all a short story, which is having great moral. So let's start the story. It is all about my neighborhood.
I used to I used to go to college and see every day at nearby my house. An old man used to be sitting there, but he used to be so sad and in anger face. Villagers were also so frustrated with him by his nature. They used to tell that that old man is always in anger, and he never used to smile and never used to talk to anyone. He was always in a bad mood. We can say that. I used to also realize the same thing, that why he's always in bad mood. But one day I went to him and I asked him personally, Uncle, what is the reason why do you become so angry and don't talk to anyone? He didn't tell me anything, but I also thought that it's okay. But suddenly one day, rumor spread that he is he's so friendly now. Now he has totally changed, and he talks to someone else also, and he smiles also. So that's a great thing. I personally again went to him and I asked him, Uncle, now you have totally changed. What is the reason that you behave like this and all? He told me that I used to chase happiness earlier. I used to find happiness in my life, but I didn't find it. So now I am living without happiness. So at last, this is the moral of the story, that we should not chase happiness. It will come in our life if we deserve it. That's all. Thank you. Okay. So again, story was good, but flow was not good. ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में फर्क आना चाहिए. ठीक है, स्टोरी जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा इमोशन आना चाहिए. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी पर्सन हियर. प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम यहाँ पर कम्युनिकेशन में नहीं, आपका प्रॉब्लम लैंग्वेज में. इफ द सेम थिंग आई हैव टोल्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट टू स्पीक इन हिंदी, तो बहुत सारे लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बेटर हो जाता. ठीक है, लेकिन इंग्लिश जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आप लैंग्वेज स्विच करते हैं, आपका थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट हो जाता है. ठीक है, तो उसकी वजह से आपका प्रेजेंटेशन पे बहुत असर पड़ता है. तो ट्राई टू बी अ लिटिल मोर अटैच्ड टू योर स्टोरी. ठीक है, तभी आपका वेरिएशन, जो टोन, पिच और फ्लो के ऊपर मैं वर्क करने बोल रही हूँ, वो तभी आपका होगा जब आप इमोशनली अटैच्ड रहेंगे अपनी स्टोरी से. ठीक है, एनीवन एल्स? ठीक है, टाइम हो गया है, तो लेट्स एंड द क्लास फ्रॉम हियर. आई हैव रिटन, जो मीटिंग है उसके चैट बॉक्स में मैंने नाम दे दिए हैं उन स्टूडेंट के जो कल प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, I have the name with me also. So next class मुझे 1 by 1, sequential ना हो वो चलेगा, लेकिन 1 by 1 हर एक स्टूडेंट, यहाँ जितना भी 8 स्टूडेंट हैं, सभी 8 स्टूडेंट प्रेजेंट करेंगे. If they want to go first, just raise their hand. Otherwise 1 by 1 सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ बोलूंगी प्रेजेंट करने के लिए. Yes, yes. Yes, ma'am. Sorry to interrupt you, ma'am. Yes, ma'am. It's a humble request that you kindly take a attendance and just inform that I have taken your attendance, because due to many reasons, attendance has been cutted. You got offline. That's why. नहीं, सी दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. यही सारी रीजंस की वजह से हमने मैनुअल लेना बंद कर दिया, क्योंकि मैनुअल में क्या होता है कि मैं जब आपका स्क्रीनशॉट ले रही हूँ मान लीजिए, या फिर मैं अगर बना रही हूँ अटेंडेंस, तो उस टाइम आप डिस्कनेक्ट हो गए, तो इसीलिए मैनुअल लेना हमने छोड़ दिया. हमने क्या किया है कि ये जो आईडी है यहाँ पर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है. एक बार अगर आप लॉग इन कर देते हैं, कब लीव किए कब लॉग इन किए, ये आपका टाइमिंग नोट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर बीच में किसी का अगर नेटवर्क इश्यूज की वजह से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो रिकनेक्ट होने पे भी टाइमिंग वहां पर दिखाएगा. वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, अटेंडेंस मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, वहीं से बनेगा. तो इसीलिए मैंने कहा था कि सीमेज वाली अगर आईडी रहेगी तो बनाने में ज्यादा आसान रहेगा. ठीक है, सीमेज वाला आईडी से आपका लॉग इन हो जाएगा. Okay, that's me. I want to be sure. Thank you, ma'am. ओके, एनीवन एल्स? और किसी को कोई डाउट नहीं है? अगेन बाकी स्टूडेंट को भी मैं बता दूं, अभी से जितने भी क्लासेस आप करेंगे आपका, यस रोशन.
मैम ईमेल आईडी और पासवर्ड, मैम ईमेल आईडी और पासवर्ड जूम पे ही ना होना चाहिए। जो ईमेल आईडी पासवर्ड आपको दिया गया है उसी से जूम लॉगिन करना है, ठीक है। जूम उसी जूम आईडी नहीं से, मैम, मतलब गूगल पे हाँ नहीं ना, जूम पे ना। हाँ जूम पे लॉगिन करना है, और ठीक वहीं है, पर आपको जूम आईडी दी गई है कॉलेज से, वहीं पर आपको रजिस्टर होगा उसी से। थैंक यू मैम। ओके, तो लेट्स एंड द लाइव स्ट्रीम नाउ, ठीक है। क्लास एंड करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास लेट्स मीट देयर, ओके। जितने भी स्टूडेंट हैं बी प्रिपेयर्ड। यस विजेश। मैम जिसका दिसंबर का 75% से कम है उसका क्या होगा? 75% से कम है, अब दिसंबर में तो नहीं जा सकते हो, आपका हो सकता है असाइनमेंट वगैरह के मार्क्स से बढ़ा दिया जाए, बट वो मेरे हाथ में नहीं है। जिसका भी अटेंडेंस कम है, ठीक है, आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे शायद, अदरवाइज फिर आप अब से रेगुलर रहिए। ठीक है। ओके, यस, बहुत सारे बच्चों को डाउट है, इज दिस रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन और एनीथिंग एल्स? यस प्रियंका। Ma'am, if I want to present another story, I can. यस बिल्कुल बिल्कुल, if we get enough time then you can present, ठीक है। Thank you, ma'am. ओके, यस अभिषेक। मैम मेरा आया ही नहीं अटेंडेंस वाला में। अटेंडेंस वाला में नहीं आया मतलब? अटेंडेंस वाला मैम मैसेज नहीं आया मैम, कितना परसेंट प्रेजेंट है। अब दैट इज नॉट माय इशू, वो आप अथॉरिटीज से बात करिए। यस युजेंद्र, कहाँ गए थे तुम? मैम मेरा भी मैसेज नहीं आया। बच्चे दैट इज नॉट माय इशू, ठीक है। यहाँ पर अटेंडेंस बन गया है, आपका अटेंडेंस चला गया है उनके पास, ठीक है। और व्हेन एवर दे वांट टू प्रेजेंट दे विल प्रेजेंट, ठीक है। यस, पेरेंट्स के नंबर पे जाता है, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपका पेरेंट्स का नंबर होगा उस पे गया होगा। आस्क योर पेरेंट्स इफ दे रिसीव एनी मैसेज और नॉट, ओके। तो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, जो भी डाउट है नेक्स्ट क्लास